हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज सप्लाई। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो डिमांड था, दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा, डिमांड पढ़ा एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर के हैं, फर्म के हैं, सेलर के हैं, मैन्युफैक्चरर के हैं। These are all the same things. Okay, so now supply we will study from the manufacturer or seller or producer's point of view, और इनका main motive होता है is to earn profit. If you are going to start business in simple language, what I can say here, supply का मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी कोई supplier बनेंगे, किसी भी product के आप business में आएंगे, then what you will do, you will always try to get profit in that business. Okay, अगर आपको उसमें profit मिल रहा है, then you are going to just कंटिन्यू द बिजनेस। ओके, तो मेन मोटिव किसी भी प्रोड्यूसर का होता है टू अर्न द प्रॉफिट। और हमेशा प्रॉफिट कब होगा? व्हेन द प्राइसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन विच यू आर डूइंग द बिजनेस इज हाई। जब प्राइसेस ज्यादा होंगे तो हमेशा आपको जो है क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और डिमांड में क्या होता था? हमेशा इसको ऑपोजिट। ओके, इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप। जब प्राइसेस कम होते थे तब कंज्यूमर खरीदता है। सप्लाई में क्या होता है? Just the opposite. That is, supply and price has the direct relationship. As the price increases, the producer always start indulging in that business, in that activity of supplying the commodity, and in this way the supply increases. So इसमें क्या है? सिंपल आपको दो तीन चीजें स्टेप्स याद करने हैं। That is, first of all, हमें producers point of view पढ़ना है, right? Second is what? That there is a direct relationship between the price and the quantity supplied. And third is what? As the prices increases, the supply also increases. Now let us see what is there in given in the book. I'm going to share it here. Okay, आपके books में भी यही सब चीजें दी गई होंगी. Okay, now here in this video, what we're going to start, meaning of supply and individual supply and market supply. Okay, and then afterwards determinants हम बाद में next video में start करेंगे. Okay, so meaning of supply. Like demand, supply is also expressed as a relationship between price and quantity, as I've already told you. Before we proceed with the meaning of supply, it is important to understand some special features of supply. First of all, supply is a desired quantity. It indicates only the willingness. It means the producer is willing how much the you can say the commodity he is willing to supply in the market. How much the firm, that is the manufacturer or producer or seller, is willing to sell, and not how much it actually sells. Okay, it means willingness कितनी है कि वो कितना बेचना चाह रहा है सामान. Supply of a commodity does not comprise the entire stock of the commodity. तो entire stock को हम नहीं consider करते हैं. It indicates the quantity that the firm is willing to bring into the market at a particular price. Okay, so for example, supply of TV by Samsung in the market is not the total available stock of TV sets. It is the quantity which Samsung is willing to bring into the market for sale. तो first of all होना चाहिए इसका एक simple सा meaning है जो समझ में आना चाहिए. Supply is a desired quantity and supply of a commodity does not comprise the entire stock of the commodity. Now let's see what are the things. Supply is always expressed with reference to price. It means it has a direct relationship with the price. As the price changes, that is, it is always at a price, because with a change in price, the quantity supplied may also change. As the price increases, supply will increase, and as the price decreases, and vice versa, it will happen. Okay. Then supply is always with respect to a period of time. It means it is considered a day, supply in a day, a week, a month, or a year. So that's why we consider supply as a flow variable. Okay. Now this is sufficient for this meaning of supply here. Whenever it is asked what is supply, you can just write the definition like this. Supply refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale. It means first of all, it has the willingness to provide it into the market, and it also offers for sale at a given price, and the price should be there, which is means a producer is ready to sell at that price. Okay, during a given period of time, say a day, a week, a month, or a year. Then the definition of supply highlights four essential elements: quantity of a commodity, willingness to sell, price of the commodity, and period of time. Like demand, supply also can be either for a single seller, that is individual supply, or for the market supply. Similarly, जो हमें demand में मिलता था वही सेम चीज हमें supply में मिलेगी. That is a individual. When we are talking only about a single producer or a seller or a manufacturer, then it is an individual supply of that person. Okay, and when so many means more than one. Okay, when so many producers or manufacturers or sellers are selling the same product, so when we are drawing the supply curve
और व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट इट, दैट इज नोन एज द मार्केट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये लैपटॉप का एक है मैन्युफैक्चरर, ओके, देन आई एम ओनली स्टडिंग इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मैं स्टडी कर रही हूँ, दैट इज अ इंडिविजुअल सप्लाई। अब उस मार्केट में कितने लोग लैपटॉप वही कंपनी का या अलग कंपनीज का सेल आउट कर रहे हैं, अगर मैं उनकी स्टडी करूंगी, दैट इज गोइंग टू बी अ मार्केट सप्लाई। ओके, सो लेट्स सी हियर, in simple words we can say it refers to the quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time, right? That is difference क्या है सिर्फ इंडिविजुअल फर्म का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल द फर्म्स। सेम डिमांड कर्व में डिमांड आपने इसमें पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, सेम थिंग वही है, बस यहाँ पे क्या है, सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू हम ले रहे हैं और डिमांड में कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, राइट? नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट and it can be asked in MCQs also. Supply, stock, and one more I'm going to add, that is sale concept. Okay. Now, सबसे पहले आप ये समझ लो कि stock is the wider concept or the biggest concept in this. Okay. Stock का मतलब क्या होता है, जो भी चीज आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन स्टोर और इन गोडाउन। ओके, सप्लाई क्या हो गया, व्हाट यू आर ऑफरिंग इन द मार्केट। सेल का मतलब क्या होता है, व्हाट यू हैव ऑलरेडी सोल्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ कि स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 100 ऑफ यू कैन से पेन्स इन द स्टॉक। ओके, पेन्स मेरे पास स्टॉक में है, गोडाउन में है, और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कार्टन्स ऑफ मिल्क है मेरे पास, या मैं कहते हैं क्लोथ्स के हैं, ठीक है, 100 पैकेजेस ऑफ क्लोथ्स मेरे पास रखे हुए गोडाउन में या स्टोर में। आई ऑफर ओनली 80 मैंने स्टोर मैंने मार्केट में सेल आउट करने के लिए वो क्लोथिंग के ड्रेसेस दे दिए, ठीक है ना। सो दैट इज द supply, means I'm offering willingly, offering it. Okay, that is 80 is going to be the supply. Then now for example उसमें से खाली 10 sold out हो गए, ठीक है, तो that is going to be a part of sale। ये भी हो सकता है कि supply and sale can be equivalent, जितना मैंने ऑफर किया मार्केट में सब सामान बिक गया, ठीक है, बट स्टॉक इज ऑलवेज अ वाइडर कॉन्सेप्ट और अ बिगर कॉन्सेप्ट, बिकॉज स्टॉक का अमाउंट ही ज्यादा है, ठीक है। स्टॉक जो मेरे पास ऑलरेडी अभी भी कुछ रखा हुआ है गोडाउन में, इट इज नॉट फॉर द सेल, it is not for it, I have not given it for the supply point of view, I have not supplied it or willingly supplied to the market, okay, into the market। So now I hope you understand it now, very quickly we are going to just study that the term supply is often confused with the stock of the commodity. However, in economics, the two terms are different. Stock refers to the total quantity of a particular commodity that is available to the firm. Okay, तो वो available है firm के पास, but it is not in the market. Okay, at a particular point of time. तो ये क्या होता है, difference है, particular point of time है, and it is the total quantity, right? On the other hand, supply is that part of stock which a producer is willing to bring into the market for sale, means willingly वो चाह रहा है उसको बेचना मार्केट में, and it's offering in the market, okay? So stock can never be less than supply। ये इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं आपसे। Then for example, if a seller has 50 tons of sugar in his godown and he is willing to sell 30 tons at the rate 37 per kg, then the supply is 30 tons, because what he is offering in the market is going to be the supply, what is in the go down it is 50 tons। and for example इसमें से अगर मैं कहूँ कि 10 जो है tons आपकी sell out हो गई, तो that is going to be the sale। Okay, now very quickly we are going to just see the difference between supply and stock। first of all, supply क्या है आपका, flow variable है, and stock आपका stock variable है, right? Supply refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given period price during a given period of time। So stock refers to the total quantity of a particular commodity that is available to the firm at a particular point of time। जो अभी की बात हम करेंगे कि इस particular point of time के पास मेरे पास क्या है, that is going to be ना stock। आज या अभी या particular point of time हम कह रहे हैं, right now कह रहे हैं, उसमें आ जाएगा stock। Okay, then supply क्या हो जाएगा आपका at offer for a sale at a given period of time। Then supply is a flow concept as it relates to a period of time, that is say day, week, month, कितनी supply हुई। Stock is not a flow concept as it relates to a particular point of time, यानी कि आज मेरे पास कितना stock है available, ठीक है, आज और अभी की बात मैं करूंगी, right now और one point of time, that is known as the stock। The supply is always related to the price of the commodity as it changes with the changes in price। For example, जैसे ही आपकी सप्लाई, अगर आपका प्राइस कम हो जाएगा, आप सप्लाई कम कर देंगे, आपका मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू,
किसी चीज का अगर दाम कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट लेना है, तो वो क्या करेगा, अपने आप उसकी सप्लाई कम कर देगा, और जैसे ही उस चीज का प्राइस बढ़ेगा वो आपको फौरन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, सप्लाई मार्केट में होगा उस प्रोडक्ट को, ठीक है। सो स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। स्टॉक का मतलब क्या है, एक चीज आपके पास गोडाउन में पड़ी हुई है, whenever you want to offer in the market, then it becomes the supply, and whatever the amount is sold from that, it is known as the sale. Okay, I hope you like the explanation here. And if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanation. And in the next video, we are going to start the determinants of supply. Okay. So hope you enjoy the session here. Take care. Keep watching, keep learning, and keep growing. Thank you.